the next category of oxidation, uh, after that opening of epoxide, so we have another type of oxidation. That oxidation is going to be called as a oxidation of olefin to the 1,2-diol. So how this reaction is going to be proceed now? Here we have olefin as your starting material. On treatment with the oxidizing agent, it's going to convert into now there are two types of diols are there now. Okay, this reaction is called as a dihydroxylation, where we are converting that olefin into the diol. Okay, this reaction is called as a dihydroxylation. Now we get the two types of our product now. Okay, it is not like that major and minor. Selectively, what one reagent give the first product, second reagent give the one, or other reagent give the second product is a major now. Now this reaction where we are going to convert olefin toward the diol, that molecules are called as a 1,2 diol now. Or that reaction is going to called as a dihydroxylation. Reaction is called as a dihydroxylation. Okay. So here olefin is going to oxidize with the help of oxidizing agent, and that form the diol. So the diol is also called as a glycol, and based on that 2OH position of OH now, we are going to classify it now. So first reaction or the first product where the both OH are on same side, that is called Sn dihydroxylation. Sn dihydroxylation. And second product is going to be called as a anti-dihydroxylation. Anti-dihydroxylation. So for the orientation of OH now, we are going to classify it now. So here must remember, you require the oxidizing agent, your olefin is the starting material, and that will form the diol now. So it may be syn, it may be anti now. Okay. Now which reagents are required? Okay. So we are interested in the reagent. okay. Now the reagents are required for the transformation. So here I will just give the list of the reagent that will converts. Okay. So let's see the reagents which are required for this category. Now we have two types of diols are there. That's why we also have the two categories of oxidation. One is those we are going to convert into the syn diol, that is called syn dihydroxylation, and one is called as anti-diol or anti-dihydroxylation. Okay, so these are the two important categories. So what is meant by syn diol now? So you can observe here the syn diol may be like this, or you can have this one.
in cyclic or acyclic molecule. What about the anti-diols now? The anti-diols are those where the stereochemistry is differed. Or here one is above the plane, second is below the plane. Or here below the plane and above the plane. Now what are the reagents are going to be used here? Okay, so we'll discuss the reagent that required for this transformation. First reagent is osmium tetroxide. Second reagent is potassium permanganate in alkali. And third reagent for syn diol is Woodward syn dihydroxylase. Okay. Similarly, for what anti-diol we have for the first reagent is the Prevost dihydroxylation, and second one the opening of epoxide by this. So basically, what the syn and anti-diols are be prepared by using this two simple categories. Okay. So before that, you must know about the syn and anti-diol. What are the reagents are required for that? OSO4, KMNO4, and Woodward. So the OSO4 and KMNO4 have the same mechanism or similar mechanism, while Woodward and Prevost also have what similarity. Okay, let's see how this syn and anti-diols are going to prepare now. Let's take the example of what this is what alkene, and here I am going to react with specific reagent. So that reagent will runs to this kind of what your molecule. Here we can use either OSO4 or either you can use the KMNO4 or here you can use the Woodward. Similarly, we have the second reaction in which we are going to prepare the anti-diol. Okay, and here the reagents are Prevost, and second reagent is important here MCPVA followed by OH negative ion. Okay, Yes, sir. this is what so seen and what the antenna. So we'll discuss the first example from this category, that is what your syn dihydroxylation, and here the first reagent is the osmium tetraoxide. How this reagent is going to work now? So basically what osmium tetroxide structurally, you know that osmium is the one of the element of periodic table exists in maximum oxidation state is a +8. So it is a solid compound. Here the oxidation state of what osmium is +8 now. Okay, and this reagent is required particularly for the preparing the syn diol now. Okay, so basically what it is a solid compound and it is prepared by the just oxidation of osmium. So here suppose an osmium undergo the what oxidation with the air, okay, and that will form the OSO4. Now this reagent generally dissolved in various solvent, example alcohol, you can take acetone, okay, sometimes ether is also there like tetrahydrofuran and all that.
Now, the most importantly, what this reagent is used to prepare the syn diol. Used to prepare okay. This is what the application of for that reagent. And if you see the reaction scheme, so you observe that this is what OSO4, and here okay. Yes, sir. Okay, got it. Yes, sir. Now you can make these two types of a diol here. Now the important thing is that this reagent is very costly now, and that's why you must need to be co-oxidant. So co-oxidant is needed because what, the byproduct should be further oxidized to OSO4 now. If after delivering the oxygen, your byproduct is example OSO2 now, that OSO2 is further oxidized to OSO4 with the help of what, a co-oxidant now. That's why the co-oxidant is needed to back to what, OSO4. Okay, and the reaction and all these things are very easier, no issue at all. Now we have to consider how this reaction is going to take place now. You know that if I'm considering this molecule now, so let's see the mechanism of this reaction. So this is what the olefin, and here my osmium is here. So this one, this is the structure of what, osmium tetroxide. Okay, and here in the presence of what solvent, example ether, acetone, what happened? Whatever reaction is this now? So this reaction is an example of 2 plus 3 cycloaddition reaction. It is an example of 2 plus 3 cycloaddition. And what is meant by cycloaddition now? The cycloaddition reactions are generally occurred on unsaturated molecules. Okay, and here the reaction is going to like that. So it is a 3 plus 2 center reaction. So one of the pi bond of what, osmium, another pi bond of what, osmium, and one pi bond from olefin now. Okay, so this is the 2 plus 3 type of cycloaddition reaction. The reaction is going to proceed via this way, and it will form a cyclic intermediate, and that intermediate is called as a osmate ester. That will be called as a, now look at this one. These are the two newly formed bond, and here oxygen, oxygen, then osmium, and this is double bond O S. Now that molecule is called as a osmate ester now. Osmate ester. That osmate ester is going to be break with the help of a various reducing agent. Various, example lithium aluminum hydride. So that reagent will break that oxygen osmium bond and will convert into the diol now. Look at the stereochemistry of the diol now. Here both OH on the same side. That's why it is an example of syn addition reaction. And concerted mechanism is there. Okay. So here this one. So this is called what, the syn diol. And your byproduct is OSO2. So that OSO2 is further oxidized by a co-oxidant, example N-methyl. Yeah, this is called marpholin oxide. Okay, and that will be formed your OSO4. That means your OSO4 is further ready for the reaction with olefin now. Suppose this is what the reaction mixture, and I have a 10 molecule of 10 equivalent of the alkene. I have the 10 equivalent of an alkene and only one equivalent of a OSO4. Then how this reaction is going to take place?
So by the reaction with OSO4, you get the one equivalent of a diol. Your byproduct is OSO2. So here I am using NMO now. Suppose I am using 10 equivalent of a 10MO. So that each and every reactant is going to oxidize. And here this OSO2 is further oxidized to OSO. So this reaction is like that, and you will get the Sn2 as a major product. So that's why so OSO4 is a costly reagent. So we have to must regenerate that OSO2, OSO4 now. Okay, Yes, sir. and sometime what the tertiary amines are also be used to enhance the rate of reaction. Tertiary cyclic amines are there. This is what the tertiary cyclic amine uh, that is used. Pyridine will also be used to increase the rate of reactions. Okay, so because that nitrogen lone pair are generally binded with the osmium. Look at this one. Example, this is what nitrogen. Example, this is what nitrogen, and that will be initiate the reaction, because if nitrogen is bonded to the osmium, so it will enhances the rate of reaction. So generally tertiary amines are also be used in this reaction. Okay, Yes, sir. now which reagents are required for reduce? Example here, what is RA now? These are the reducing agents now, and these reducing agents are example, you can use the ammonium sulfate. Okay, here there are list of what reagents are there that are called as a reducing agent, which helps to break the osmotic ester, and that are example sodium sulfate, example Na2SO3. Then we have pyridine. Okay, we have what the complex of potassium ferricyanide, example K3, K3 FeCN6, and various solutions are used to break. Generally, what lithium aluminum hydride is one of the best reagent to used for breaking that osmotic ester. So in this way, this is what the mechanistic portion behind the osmium tetraoxide. Okay, got it? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now the next part is whatever olefins are required now. Here the reactivity order of olefin is also the most important part now. Reactivity order of the alkene. Generally, what you know that osmium is existing plus state oxygen state, so that's why your olefin should be very rich. This is what the first olefin. We have simple olefin, and we have what the olefin with the withdrawal. Now, in that case, you must have donating first. This is what the reactivity order now. That means based on this, you can choose. Suppose we have more than one double bond is there, and we have OSO4. So then you can preferentially do the dihydroxylation on particularly electron rich double bond. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now what about the stereochemistry now? Example, sterically less crowded site should be preferred, because you know that osmotic ester is bulkier one. So always it develop on sterically less crowded side. So example, this is OSO4 now, and here pyridine is given, and as a solvent is ether. Example Et2O. So here you can consider here. So this is what my methyl group, and here I am going to prepare the OH, which is opposed to that of your methyl group. So that means we have to do the oxidation, or we have to do the dihydrogenation predominantly onto the sterically less crowded
phase or sterically least crowded site of that double bond. Okay, then there will be no chelation is affected now. So there will be what, this is most important, no chelation is occurred. Okay, so we have also one example in last some reaction example like in MCPB we are discussed about the chelation now. Example, chelating group is there as an OH, and where I am going to react with OSO4 and remaining reagents are there. Again we have to get the product as in previous reaction. Okay, must keep in mind there is no chelation is occurred at neutral or simple condition, but chelation is occurred in the presence of a tertiary amine. If tertiary amines are there, then it undergo the what, the chelation, neither not. Okay, so if we'll take the same reaction, then chelation is going to take place. Okay, so this reaction is a stereo selective reaction. Okay, got it. Yes, sir. Yes, sir. So here no chelation and chelation is occurred in presence of tertiary amine. So suppose I have the simple molecules example bicyclic alkene, then whatever the chemistry is there now, look at this one. So what happened when this OSO4 is going to treat? You know that it is occurred on sterically least crowded side. So which will be the least crowded side, whether exo or endo? Exo. Exo, sir. Okay, exo will be the least crowded one. So here the dihydroxylation should be on sterically least crowded side. What about this example? Endo is the major. Okay, so that this will be Endo. give the endo will be the major. So the OSO4 is what, the one of the very costly the reagent. That's why to reoxidize it, we have the co-oxidant now. As already mentioned, the co-oxidants are nothing but they further oxidize the byproduct, that is OSO2. Okay, the role of co-oxidant is what? They further oxidize to the the first reagent is H2O2. Second one is what? Tertiary butyl hydroperoxide. Third one is uh, chlorate, potassium chlorate, that is KClO3. The fourth one is NMO, that is called N-methyl N-methyl morpholine. What is morpholine now? Oxygen, nitrogen. And here, this is what oxygen and this is what methyl. So this is what N-methyl morpholine N oxide, simply called as a NMO now. And sometimes what we have tertiary amines with oxygen. These all are the reagents used to convert your byproduct, that is OSO2, to the OSO. Okay, got it? Yes, sir. Yes, sir.
So this reagent is used in various steroid molecule also. Now in case of what polynuclear aromatic hydrocarbon, the oxidation of what the last ring is going to take place. Example, this is anthracene now, and here that anthracene molecule is going to be converts into uh, to this one. So basically this reaction is proceed via the two-step mechanism. First is with the help of what OSO4, the last ring will be going to oxidized, while remaining two rings are what inert. Now here look at this one. This is what one OH, another OH. Here this is what the diol formation, and with the help of what the specific reagent, that is K3 FeCN6, you will get this compound, which is the byproduct is the oxalic acid. And if you have the tetracene as a molecule, this one, then oxidation of what this one is going to take place. The angular position will be a reactive one. Okay, so this is what the applications of what this reagent. So next to that, I will give some examples to you. So must find out. Okay, so what happened in this molecule? Okay, find out the product of these reactions. So if the methyl group is there already, we can do the dihydroxylation. If you are considered the methyl is back, then your OH should be on the front. Here the mechanism is goes via, this is what CH3 8 prime. This is what carbon carbon single bond, CH2 again 8 time. Okay, so what is the product now? Yes, सेम ही मिलेंगे सर. here also the same. And here what we can यहाँ पे develop भी the सेम.
ऐसे आपको बनाना पड़ेगा उसको। Now what happen when this molecule is on treatment with LDA, lithium diisopropylamide? It is a very strong base. It will take the hydrogen from here. This bond is going to transform here, and later on this will be also going to shift here now, and this hydrogen is going to free now. So that means hydrogen molecule is liberated here, and there is a formation of a product. That product is a Diol. dicarbonyl compound. Basically what? No, it is a dione here like this. ऐसे आपको बनेगा दो, और इस मॉलिक्यूल पे आप इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डाइल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं. So by the application of what OH negative ion, so find out the product. सर फिर ऑप्शन कौन सा चूज करना पड़ेगा इसमें? अगर आंसर लिखना है पेपर में तो फिर एलडीए दिया रहेगा तो ये लास्ट वाला, नहीं तो फिर यहाँ तक ही रखना है इसको. एक्चुअली भी एलडीए वैसे काम नहीं करता है यहाँ पे हमको नेक्स्ट रीजन पढ़ना होता है जो डायल को ब्रेक करे. ठीक है. और जनरली जो अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी जो है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, वट एवर डायल ये हाउ इट ब्रेक इनटू बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो डायल क्या करता है या रिएजेंट क्या करता है, इसको ब्रेक करता है, एंड दैट ब्रेकिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड. ऐसे वाला आपको पढ़ना है. इसको बोलते हैं क्लीवेज ऑफ डायल. लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट जो था आपका वो ऐसे वाला है, इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ what OH now, then it will converts to the dicarbonyl compound. ऐसे यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला. अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन में जाएगा. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन फिर, जो ऐसा काम कर रहा है. तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने वाले हैं दैट इज LTA, इसका नाम है लीड टेट्रा एसिटेट, या फिर हम इसको HiO4, दोनों में से एक रिएजेंट लेकर इसको ये काम करवा सकते हैं. ये अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे. फिलहाल में आप इतना याद रखो कि आप एलडीए से रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका लिबरेट हो गया, एंड व्हाट you will get this kind of the product. So this is about chemistry behind the osmium tetroxide. So it is a 2+3 cycloaddition reaction forming the osmotic ester, and that will be gives the pure final product. ठीक है. तो अभी हमारा पहला reagent हो गया, that is called OSO4. Now we'll going to discuss about the second reagent, that is what KMnO4. So potassium permanganate. ये तो बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट इसके साथ हमको बेसिक कंडीशन आपको इसका पीएच जो है उसको मेंटेन रखना होता है. वी हैव टू मस्ट मेंटेन द पीएच ऑफ दैट रिएजेंट. सो वी हैव टू अप्लाई दैट रिएजेंट इन अ बेसिक मीडियम. अगर हम पीएच मेंटेन नहीं करते सो दैट मींस इट शो द वेरियस रिएक्शंस. एग्जांपल जो है ओवर ऑक्सीडेशन वगैरह ये दिखा सकता है. ओके. अब पोटेशियम परमैंगनेट कैसे होता है, we have MnO4 negative now. KMnO4, इसमें यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. So that means O negative, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे रहेगा आपका. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ओके. अब पोटेशियम परमैंगनेट की जो रिएक्शन है आपको ये सेम उसकी तरह से होगी आपकी अल्कीन, और via with the help of that oxidation it going to converts into the diol. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. दिस इज व्हाट इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके. और हमारे पास जो अल्कीन है वो कैसा है, वो ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक. तो ये इन दोनों की रिएक्शन होगी क्या, ये तो रिएक्शन कभी होगी नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग फेज में जाते हैं. तो यहाँ पे हमको दो दो सॉल्वेंट यूज करने पड़ेंगे, फिर भी रिएक्शन आपकी होती नहीं. तो फिर हम क्या करते हैं, सो देन फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द, और वी आर गोइंग टू टेक द रिएक्शन इन अकाउंट एज द पीटीसी, जिसको हम बोलते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट. क्या नाम है इसका, फेज
ट्रांसफर कैटलिस्ट। अब फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है? जनरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसमें लिए जाते हैं। कौन? एग्जाम्पल ऑफ दिस फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेने के बाद ये क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट? एग्जाम्पल, हमने ये KMnO4 और इसको मिक्स कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दो लेयर बन जाएंगे आपके। एक मान लेते हैं कि एक्वस लेयर ऊपर रहेगी, ऑर्गेनिक लेयर आपकी नीचे रहेगी, या फिर ऑर्गेनिक लेयर ऊपर रहेगी, एक्वस लेयर नीचे रहेगी। तो जब दो लेयर बन जाते हैं तो कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये KMnO4 है और ये आपका अल्कीन है। अब दोनों को रिएक्ट तो करना है, लेकिन ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल है तुम्हारा R4N+X नेगेटिव। तो R4N+X क्या करता है? इसमें एबिलिटी ऐसी होती है जो दोनों के साथ मिल जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये पहले क्या करता है? ये पहले KMnO4 के साथ सॉल्ट बना देगा, बराबर है। और सॉल्ट बनाने के बाद अब जैसे एग्जाम्पल ये क्या करता है? इफ इट रिएक्ट विद KMnO4 नाउ, सबसे पहली रिएक्शन देखो इसकी क्या होती है। सबसे पहले ये क्या करता है, जो R4 है N+X नेगेटिव, ये बाइंड होगा किसके साथ में? KMnO4 के साथ। बाहर आपका क्या निकल रहा है? KX बाहर निकलेगा और ये सॉल्ट बनेगा आपका R4N+, और ये नेगेटिव चार्ज लग गया इसके साथ। देखो क्या हो गया, ये हो गया ना उसके साथ बाइंड। और ये जो कंपाउंड है ये आपका रिएक्ट होगा किसके साथ में? अल्कीन के साथ। तो मतलब यहाँ पे ये सोल्यूबल है, फिर ये इसको इधर लेके जाएगा और वो रिएक्शंस करवाएगा वापस से। रिएक्शंस करने के बाद जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डायल मिलेगा, प्लस जो भी आपका सॉल्ट है वो बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस PTC दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल ना। नहीं तो ये पॉसिबल है क्या रिएक्शन? No. नहीं पॉसिबल। नो। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों फेज अलग अलग है और दोनों फेज को हम एक में ला नहीं सकते। बट PTC के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। तो पहला है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और दूसरा है क्राउन ईथर। सो वी हैव क्राउन ईथर। तो ऐसे दो एक सब्सटेंसेस है जिनको जनरली यूज किया जाता है फेज ट्रांसफर करने के लिए। और इनकी इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? ये दोनों के साथ सोल्यूबल होते हैं। तो पहले ये पहले फेज में जाके बॉन्ड बना लेते हैं और फिर वो उसको लेके दूसरे फेज में चले जाते हैं। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू मस्ट कंसीडर द PTC along with the KMnO4। एक तो बेसिक कंडीशन है और दूसरा PTC होना जरूरी है। वैसे KMnO4 क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्शन है ये डिपेंड करते हैं आपकी कंडीशंस। एग्जांपल KMnO4 ले लिया आपने और हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस, एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन। सो लेट्स वी हैव कंसीडर द एसिडिक वन। एसिडिक मतलब जिसका pH कम है, न्यूट्रल मतलब जिसका pH 7 के आसपास है, और एक होता है आपका बेसिक, या जिसको अपन अल्कलाइन भी बोल सकते। सो अब यहाँ पे एसिडिक में और न्यूट्रल में क्या होता है कि देर इज एन ओवर ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्या हो रहा है? ये ओवर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो आप डायल बना रहे हैं अल्कीन से, और उसका कन्वर्शन आगे जा रहा है, और ये जो रिएक्शन है ये हमको डायल मिलेगा। इसीलिए जस्ट टेक द एग्जांपल नाउ। सो सपोज यहाँ पे मेरे पास ये अल्कीन है और मैं इसके साथ ये दो कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ। एक पहली कंडीशन कौन सी है? एसिडिक है या फिर न्यूट्रल, और ये कौन है आपका? बेसिक। तो यहाँ पे क्या होता है? यू गेट द मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट। ना मिलना चाहिए था तुमको क्या वाला कंपाउंड? ये वाला कंपाउंड। बट तुमको एक्सपेक्टेडली मिलता क्या है? आइदर तुमको ये वाले मिलेंगे या फिर कहीं पे आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दिस वन, ऐसे आपको मिलेगा। वेरियस पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर। ना मिलना चाहिए था ये वाला, मिल क्या गए कुछ और मिल। बट बेसिक कंडीशन में जो है वही होता है। इन बेसिक कंडीशन वी गेट द ओनली डायल। इसीलिए जब भी हम KMnO4 को यूज करेंगे वी मस्ट हैव द अल्कलाइन कंडीशन।
Understood? Yes, Yes, sir. sir. Now we are interested in the mechanism portion now. तो mechanism कैसे होता होगा इसका? वही same 2+3 cycloaddition reaction. Now first what we have to take the olefin. This is what alkene, and my skeleton is MnO4 negative now. This is Mn, जिसमें क्या लिया है? O negative, double bond, one more double bond, and this is what KMnO4 now. अब होता क्या है यहाँ पे? KMnO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +7 है. यहाँ पे Mn की ऑक्सीजन कितनी है? +7. ठीक है. अब हमको देखना है कितनी ऑक्सीजन स्टेट उसकी चेंज होती है. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन नाउ. So, example, this O negative is going to react on the one of the end of carbon-carbon double bond. This will be going to shift here, and this will be going to shift here. This is called 2+3 cycloaddition. और cycloaddition में हमेशा रिएक्शन जो होती है वो टर्मिनी पे होती है. रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द टर्मिनी ऑफ pi bond. ठीक है. यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग गया, यहाँ पे एक लग गया ऑक्सीजन. आगे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्या है ये? Mn, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड. चलिए आगे क्या हो जाएगा? नाउ दिस इज कॉल्ड मैग्नेट ईस्टर. इसको क्या बोलेंगे अपन? मैग्नेट ईस्टर. And that magnet ester is going to be break under the presence of a base or that OH negative ion. ठीक है. So it will be form the product. That product is, पहले आप इसको react कर सकते हैं, इसको break कर सकते हैं. So what happened with this OH negative ion? It going to attack on manganese. The bond will open toward oxygen. Further it open to or restore toward the Mn. Okay. And this will be cleaved like this. जब आपको इस तरह से ये स्केलेटन मिल रहा है. चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये आप डायरेक्टली भी उसको ब्रेक कर सकते हैं. यू कैन आल्सो ब्रेक लाइक दिस. नेक्स्ट क्या हो रहा है? दिस इज ऑक्सीजन. ये तो आपका O नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे Mn, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, and this is what? OH. Finally, that hydrogen bond will be migrate here, and this will be going to break. क्या रहेगा बाय प्रोडक्ट आपका? एक तो डायल मिल रहा है आपको, वो भी कैसे वाला? कैसे वाला डायल मिल रहा है आपको? Seen dial. So expected product is what? This one. This is what? अब अगर बाय प्रोडक्ट आप देखोगे तो क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट? एक है Mn, उसके साथ क्या लगा हुआ है? तो उसके साथ क्या लगा हुआ है? यहाँ पे इसको जो है Double ये bonded. रिस्टोर नहीं किया. मतलब ये एक ऑक्सीजन आपका ऐसे रहेगा. मतलब व्हाट? यू विल गेट MnO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O and double bond. So that Mn is in the +5 oxidation state. तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से Mn जो है आपका वो 5 में कन्वर्ट हो रहा है. So this process is required a 2 electron transfer now. Okay. So MnO bond आपका क्लीव हो रहा है and without changing the stereochemistry. That's called the, this is what the Sn addition. तो उसी टाइप की रिएक्शन है. It is a Sn addition reaction. Again, समझ में आ रहा है ना मैकेनिज्म? Yes, sir. Now again,
all the examples which are same as that of your OSO4 now. Example, KMNO4 do the oxidation on the predominantly less crowded site of the double bond. Look at this example. But the most important condition is we have basic medium should be there. KMNO4 in acetone. In this condition, you will get the product is the this will be the major product. And you know that if I use that cis compound, अगर हम cis लेते हैं और इस पे KMNO4 की reactions करते हैं in basic medium, तो cis give the only one product, cis plus cis, that will give the diol which is syn, क्योंकि दोनों कैसे sin है. और अगर हमने एंटी अगर लिया है, एंटी मतलब ओलेफिन अगर ट्रांस हमने लिया है और रिएजेंट कैसा हमारा सिन एडिशन वाला रिएजेंट है, सो दैट विल गिव द टू प्रोडक्ट्स ना. वन इज दिस वन और एक जो है मतलब आपको यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस कंपाउंड की वो मेसो और यहाँ पे जो आपको मिलेंगे एक्टिव फॉर्म्स मिलेंगे. क्योंकि क्या होता है, दिस इज व्हाट सिस अल्कीन एंड रिएजेंट इज एन कौन सा एडिशन रिएजेंट है ये सिन एडिशन. तो इसीलिए जब दोनों सेम रहेंगे दैट विल गिव द सिंगल प्रोडक्ट इज वन मिसो. ये कैसा है ट्रांस है और ये कैसे एडिशन दिखाता है सिन एडिशन. तो इसलिए ट्रांस एंड सिन मतलब दोनों अपोजिट रहेंगे तो यू गेट द टू प्रोडक्ट. एग्जांपल अगर इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो इसको आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा. रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलता है और वो भी इसका प्रोपोर्शन कितना रहेगा 1:1. Now let's look at some example. So और ये रिएक्शन पीएच कंट्रोल में आती है बराबर, क्योंकि जहां पे आप बेसिक करेंगे तभी आपको डायल मिलता है, ना इधर आपको डायल मिलेगा नहीं. So let's take the example of pinene, alpha pinene. So alpha pinene on treatment with your compound example KMNO4, then benzene as a solvent, the crown ether as a PTC, so what product will be expected now here? And resulting product showing the haloform reaction. Now can you predict the product of this reaction? How this will be a proceed now? So if we take the product of this reaction, you will get the diol now, right? तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? You will get the diol. यहाँ पर एक OH लगेगा और यहाँ पर एक OH लगेगा. But this is going to be converts into the ketone and acid. How it will be now? Now look at this one. यहाँ पे क्या होता है? This hydrogen is going to shifted here, and this bond will be break like this fashion. So in that reactions, what happen now here? So you will get the carboxylic acid, and that product is to be like this one. And pionic acid इसका नाम है. अब इसमें जो ये दिखता है ना ये कौन है आपका मिथाइल कीटोन है. So मिथाइल कीटोन इज प्रोसीड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखा सकते हैं. ये क्या दिखाएगा पॉजिटिव, क्या दिखाता है
पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। सिमिलरली व्हाट, अ पॉजिटिव हैलोफॉर्म मतलब जिसमें मिथिल कीटोन होता है वो वाले कंपाउंड। सिमिलरली व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? Here everything is same, but instead of that we are going to use the PTC now. Here R4 N plus and X negative. क्या मिलेगा इसमें आपको? Yes, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। Hmm. So this is what simple olefin now, and that will be converted into the your Diol. diol now. Okay. So this is about the KMNO4, which is again versatile molecule, but इसका pH बहुत जरूरी है. We have to maintain the pH now, then the reaction going to proceed. The next one for syn dihydroxylation, that is called Woodward dihydroxylation. So here Woodward dihydroxylation is a type of a reaction where we can prepare uh, the syn diol, and the reagents are used here in this transformation is iodine in combination with silver acetate Ag, that is RCOO Ag, and here the most important condition is what? Wet condition is there now. We can use a polar solvent. Okay, that's why this is a the wet condition reaction. This is what? Wet condition. That is, there should be a water or aqueous solvent is there now. And what type of the reaction is this now? Reaction is very simple. Take this alkene, is going to react with that all reagent, okay, and here it will convert into the same diol. Okay. Okay sir. Okay sir. Now what will be the expected mechanism behind this reaction now? So you can also consider this alkene. You will get this product as a major, or you can have this one. Okay. So this reaction is goes to syn dihydroxylation. We can call it as the syn diol form, or the syn dihydroxylation. That will be the name of this particular transformation. So now the interested part is what the mechanism now. Here this reagent is going to be used now. Now the mechanism part is very interested because it is also applicable to pre-host. So you know that all the double bonds are planar. All the double bonds are planar, and we are going to do the reaction with iodine now. You know that I2 molecule is react like electrophilic addition reaction, and we already discussed how olefins are react with iodine. So this double bond simultaneously react with the iodine, and this will be I will be free now. The first step is formation of three-membered ring. You can develop the three-membered ring either above the plane or either below the plane now, and that will be called as a iodonium ion. Must remember this double bond is symmetric, so you can be prepared, or you can form both type of iodinium ion. If I am here using the above the plane iodinium ion, then the reaction will be completely different from below the plane iodinium ion.
So here both type of iodinations are possible. Okay. You can also consider the second path. Okay. Now the next reagent is what? Silver acetate now. So here RCOO negative and this is what Ag. You know that this silver acetate ion is added on to the iodinium ion via Sn2 fashion. If it is iodine is present above the plane, then it should be attacked from which side? That is called Sn2 mechanism. And in Sn2 mechanism, what will be the expected product now? Look at this one. So example here, the ring will be open, the iodine will be here, and here the stereochemistry is goes. This will be O, then C double bond O, and this will be R. So this type of a molecule is expected now. This is what iodine. In the next step, what happened? You know the neighboring group participation. What is neighboring group participation? Where the nucleophile and electrophile both are present in the same molecule. Now these are the lone pair on oxygen which going to attack here and iodine will be free now. Again, which type of reaction is this? Again Sn2. Your iodine is present above the plane, so you must add the nucleophile from below the plane now. So what will be the expected product now? Next step is what? Here the oxygen and this oxygen which are present both on below the plane. Look at the stereochemistry changes here. So up to that the mechanism is common in Prevost as well as the Woodward. Now the resonance structure is there because that oxygen positive charge is going to delocalize. So how? These are the lone pair which going to shift here and this charge is going to neutralize. So this is called as the resonating structures of the cyclic molecule. This is oxygen. Now here this is my R and now this is the double bond and this was the positive charge. Now I have the wet condition now. That means I have the water. So here in the last step I am going to add the water. Now where I will add that water now? So water is going to added on to this carbon. What happened in the next step? So this bond will be open to like this fashion. Okay. So what will be the next step now? So here this is what the ring and now oxygen, oxygen. This is what my ring. Here the OH is there and this is what R is there. Now this ring is break in this fashion without changing the stereochemistry of that oxygen. And finally, this will be the my O negative. This will be the oxygen. C double bond O, and this is what R now. So this compound undergoes a hydrolysis, so that ester will be converted to acid. And this is the final product of the reaction. If I prepare the iodine on the below the plane, so the my final product should be on above the plane. So you can solve yourself by preparing the iodinium ion below the plane and you will get the product. So this is what the syn dihydroxylation or it is a wet condition type of what hydroxylation. Up to that the mechanism is again common in Prevost also. So no need to consider the further mechanism. Okay. Yes, sir.
Now, if what happen if any the subfuel is present, then what type of the reaction will be going to proceed now? If any subfuel is present now, then what happen? Then whether it will be on same side to that of subsequent or opposite side of the subsequent now. This one कैसे हो जाएगा ये? नहीं सर, ये आयोडीन नीचे से आएगा और आगे वाला OH वो ऊपर से आएगा. And always remember, this is what there is no chelation is occurred now, but because of the stereochemistry of what iodine, here this type of product is appeared as a major product. Always remember this condition. Now we'll discuss how it will be proceed now. First we have to prepare the iodinium ion. Okay, पहले क्या करेंगे अपन इसमें? अब आयोडीनियम कहाँ पे बनेगा? बिलो द प्लेन, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे मिथिल प्रेजेंट है अबोव द प्लेन, तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये रहा मेरा आयोडीनियम आयन. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा इसमें? अभी कौन है मेरे पास? आई हैव द PHCOO नेगेटिव, सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन. अब ये कैसे ऐड होगा? ये Sn2 ऐड हो रहा है, मतलब जो आयोडीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये उसके अपोजिट में ऐड हो रहा है. तो आयोडीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? कैसे? अबाउट द प्लेन आएगा वो आयोडीन. सो आयोडीन कैसा है? आयोडीन बिलो द प्लेन है तो आने वाला अबाउट द प्लेन. हाँ, वो आएगा अबोव द प्लेन्स. इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे OCO and this is what pH. Now the next step is neighboring group participation. Next step is what? Neighboring group participation and further Sn2. फिर ये Sn2 कैसे होगा आपका? This Sn2 is goes via again से यहाँ पे इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब ये भी बैक साइड से अटैक करेगा और बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा? फिर ये मिथाइल रहा तुम्हारा. ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये रहा मेरा पीएच और ये आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट. अब इसका आपको क्या दिखाना है? रेजोनेंस. चलिए आगे बढ़िए. ऐसा बनेगा. ये कैसे हुआ? ये ऐसे. And now the last step is what? Addition of water, because it is a wet condition reaction, so we have to add the water now. क्या करना पड़ेगा आपको? We have to add the water. और वाटर कहाँ पे ऐड होता है? यहाँ से. It will be because there is a deficiency on oxygen, so we have to add the water on that carbon. यहाँ पे मिथिल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ बदली नहीं है, तो जैसे कि वैसे चल रही है तुम्हारी. And here oxygen, oxygen. Okay, this is what OH, this is pH. अब ये इतना अंडरस्टूड है कि आपका वाटर हमने ऐड किया लेकिन लिखा OH, तो जो एसिटेट आयन है या जो Ag है, नेगेटिव आयन है, कहीं ना कहीं वो आपका प्रोटॉन लेके जा रहा है. फाइनल प्रोडक्ट जो है आप so the ring will be open. OCOPH and this is what O negative. अभी फिर से आपको हाइड्रोलिसिस करना है H3O प्लस और आपको जो है जो प्रोडक्ट हमने लिखा है इधर वो हमको मिलेगा इधर. आ गया समझ में?
यस सर। तो ये ऐसे होता है। और अगर यही मॉलिक्यूल पे अगर हम KMnO4 या OSO4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसी मॉलिक्यूल पे क्या यूज करते हैं, KMnO4 यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर? यस, क्या हो रहा है? समझ में आएंगे क्या करना है इसके अलावा? हेलो, ओके फाइन। तो ये रहा तुम्हारा वुडवर्ड। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल्स ऑफ वुडवर्ड। सो आपने इसको घर पे सॉल्व कर लेना। Okay, so these are the examples for you. So just take the reagent is RCO2 Ag. This is iodine, and here aqueous ACOH is a condition, and what saponification last. तो ये सब आपको कॉमन रहेगा लास्ट तक। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। अब जैसा हमने वुडवर्ड का मैकेनिज्म देखा, वैसा प्रीवोस्ट का है। प्रीवोस्ट का मैकेनिज्म कहाँ तक कॉमन रहेगा? यहाँ तक, जहाँ तक ये ग्रीन लाइन लिखी हुई है, ये वाला यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद थोड़ा सा बदल जाएगा वो, क्योंकि वो अनहाइड्रस कंडीशन में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट योर हेडिंग इज व्हाट? द प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अभी हमने जो पढ़े हैं अभी तक किसके पढ़े हैं? ये सीन वाले थे। अभी हम क्या बनाएंगे? एंटी डायोल। नाउ विल प्रिपेयर द एंटी डायल। नाउ एंटी डायल्स प्रिपरेशन। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब प्रीवोस्ट जो है, इसमें हम ड्राई कंडीशन मेंटेन, जैसे उसमें वेट किया था, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें ड्राई कंडीशन मेंशन करते हैं या मेंटेन करते हैं ड्राई कंडीशन। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रीवोस्ट ड्राई एंड प्रोडक्ट इज ट्रांस। यानी कि प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है आपको? एंटी डायोल आपको मिल रहा है। बट वुडवर्ड में कैसे मिला था? वुडवर्ड में सिस मिला था। तो ये वेट कंडीशन भी है, तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? वुडवर्ड वेट एंड योर प्रोडक्ट इज सिस। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। Now which reagent is going to use now here? अब रिएजेंट कौन सा आपको यूज करना है? इसमें भी तो सेम रिएजेंट है, बस चेंज क्या है थोड़ा। यहाँ पे I2 लिया, यहाँ पे सिल्वर एसिटेट लिया, और यहाँ पे हम जो है वो अनहाइड्रस सॉल्वेंट यूज करते हैं। एग्जांपल CCl4 वगैरह हम यहाँ पे यूज करें। ओके, और इस R के जगह पे आप फेनिल या बेंजीन ले सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, CCl4 या फिर C6H6 ये रहेगा। अब रिएक्शन स्कीम क्या है आपकी? रिएक्शन स्कीम तो ये वाली है, जिसमें हम जो बना रहे वो डायल आपका कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एंटी। और एंटी डायल का मतलब होता है देयर OH शुड बी ऑन अपोजिट वे। एक OH अगर बिलो द प्लेन होगा तो दूसरा कैसा होना चाहिए? अबोव द प्लेन। अगर ये वाला अबोव द प्लेन है तो ये वाला चाहिए आपको बिलो द प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
नाउ विल सी द मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म आपका कहाँ तक सेम है, हियर we'll consider this is a simple example. Here I am going to react with I2. The first step is formation of, अब किसी ने मानो फ्रंट साइड बनाया, किसी ने बैक साइड बना सकते हैं, तो ये हाउ द चॉइस। ओके, आपके पास वो चॉइस है, आपको जो बनाना है वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको फ्रंट साइड से बनाया है आयोडोनियम आयन को, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें RCOO नेगेटिव को रिएक्ट करना है। सो दैट विल बी गोइंग टू अटैक फ्रॉम बैक साइड। कौन से साइड से अटैक कर रहे हैं, बैक साइड से, एंड दिस इज व्हाट Sn2 रिएक्शन। हियर लाइक दिस, ये रहा मेरा आयोडीन, और अभी जो मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया है वो कैसा हो गया, ये O C double bond O, and this is R. Now this molecule is proceed in neighboring group participation. तो neighboring group participation का मतलब क्या होता है, this will be like this। ये भी कहाँ से जाएगा, बैक साइड से, मतलब फर्दर ascent। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। सर उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर निकालें। कैसे हो गया ये, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद आप निकाल रहे हो इसका ये वाला स्ट्रक्चर। ये देखो, इसको प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे आपका लग गया ये R, और डबल बॉन्ड यहाँ पे। नाउ विल डिस्कस, विल हैव टू मेंशन द रेजोनेंस। नाउ यहाँ तक तो उधर भी कॉमन है, कि रेजोनेंस किसकी वजह से हो रहा है, ये लोन पेयर की वजह से। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। सर चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मेरे पास सॉल्वेंट है सिर्फ, तो मैं फर्दर रिएक्ट करता हूँ इसके अंदर, यहाँ से मैकेनिज्म बदल जाता है। तो वुडवर्ड में हमने यहाँ पे वाटर ऐड किया था, और यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है, सिल्वर एसिटेट। और जब सिल्वर एसिडेट ऐड करते तो किस साइड से ऐड होगा वो, और कैसे ऐड होता। नाउ डिफिशियंसी कहाँ पे, यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो मैं ये नेगेटिव चार्ज को क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू ऐड दैट नेगेटिव चार्ज ऑन हियर। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे है, ये है Sn2, मतलब पहले ही वो बैक साइड में है, तो आने वाला कैसे आएगा आपका, आने वाला फ्रंट कैसे ऐड होगा, फ्रंट से आएगा, और ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे हमने जो एडिशन किए हैं वो आ गया अबो द प्लेन, दिस इज OCOR। और एक नीचे वाला जो ग्रुप है वो कैसा है, OCOR। ठीक है, अब मुझे करना है इसका सैपोनिफिकेशन, मतलब लास्ट में मुझे क्या यूज करना है इसमें, द OH नेगेटिव आयन। और OH नेगेटिव आयन मतलब क्या होता है, ईस्टर इज गोइंग टू कन्वर्ट्स इनटू द एसिड एंड अल्कोहल। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये वही रहेगा एज ए OH, और नीचे वाला जो है ये एज ए OH। तो दिस इज कॉल्ड द एंटी डाया। समझ में आया क्या, हाँ सर।
सर लेकिन यहाँ पर तो OH डाल ही रहे ना सर, फिर तो नो 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 वाटर। नो, दोनों भी केस में आपको ये रहेगा, लास्ट स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस करना ही होता है, चाहे आप ओके। ये ले लो या चाहे ये ले लो। सो वी हैव लास्ट स्टेप इज व्हाट, सैपोनिफिकेशन। क्योंकि लास्ट स्टेप में आपको ईस्टर है ना, आपको हम्म। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा लास्ट स्टेप में। ठीक है। हाँ सर। अब आप यहाँ पे कई सारे एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई है, ये वाली, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं ये चारों रिएक्शंस इस पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे लिखो पहले केमिनोफोर इन बेसिक मीडियम विथ पीटीसी, दूसरा इसमें कौन आएगा हमारा, OSO4 along with MnO NMO और LH भी रहेगा। इसके साथ हमने इसमें यूज करना है I2 PHCO2Ag एंड C6H6, और यहाँ पे I2 PHCO2Ag और यहाँ पे रहेगा वाटर, और दोनों भी केस में आपका ऐसा है। नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। समझ में आ गया? हाँ सर, सॉल्व करते हैं। ये आराम से सॉल्व करो, अभी कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू कंसीडर हियर, ये वाला सेम मॉलिक्यूल आपको लेना है और उसके साथ आपको रिएक्शंस करनी है। एक ये वाला मॉलिक्यूल है और एक जो रहेगा, तो ऐसे तीन मॉलिक्यूल पे आपको चार रिएक्शंस करने हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। जो हमने पढ़ा बस एक ही स्लाइड में आपको आना चाहिए, और यही यही स्लाइड पे Yes, क्वेश्चन sir. जनरली। लास्ट ए जो है आपका एंटी वाला, जिसको हम बोल रहे हैं ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड बाय हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब ये वाली रिएक्शंस भी हमको एंटी डायल देती है। तो कैसे प्रोसीड करना होता है आपको, चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, अल्कीन। अल्कीन का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इपॉक्साइड बनाना पड़ेगा, और फिर OH निगेटिव डाल के क्या बनेगा आपको, ये बनेगा। द रिएक्शन इज गोइंग टू दिस फैशन। क्या लेना है तुमको यहाँ पे, ये वाला MCPB इन कॉम्बिनेशन विद dichloromethane. What will expected now? We expected the product is this one, that is epoxide. Next to that we have to add the OH negative ion. तो हमने कल देखा है कि OH negative ion तो एसेंट ऐड करता है ओपनिंग ऑफ epoxide, तो ये यहाँ से ऐड हो जाएगा and bond will be open like this fashion. So what happened in this step? This one, look at the stereochemistry of the group. This will be O negative and here OH. So by the acidification process, you will convert into the, आ गया? समझा क्या? Yes sir. Similarly, we can take the examples where we have simple must prepare the epoxide first and then add that OH negative ion. So here the resulting product stereochemistry is one above the plane, second below the plane. ऐसा। So एंटी डायल इज देयर नाउ, तो आप इसीलिए आपके पास जो सिन है और एंटी है, इनके अलग अलग रिएजेंट है।
ये कौन कौन से है फिर? एक पहला KMnO4 OSO OSO4 और एक है WWC वुडवर्ड वेट Woodward सिस प्रोडक्ट। ये क्या रहेगा आपका? ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड बाय ये वाला, और दूसरा pre-host रिवर्स ड्राई ट्रांस। ओके, okay sir. so this is all about the oxidation of what olefins to glycol, where we can prepare the 1,2-dihydroxy product that is called the diol. Now must solve the various examples. Okay, tomorrow what we'll discuss the next part from the oxidation. मॉर्निंग लेंगे क्या सर कल क्लास? कल संडे है, so we'll plan. Okay,